Good morning, students. Welcome to today's class. Today, I am going to teach you the last topic from your unit number 2nd, database query using SQL. The topic name is join. In this topic, first of all, we will discuss about what is join or what do you mean by join. Student joining, or we can say that join. A join is a query that combines rows from two or more tables. वर्ड या इस नाम से ही क्लियर है ज्वाइन करना मीन्स अगर हमें दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के रो को आपस में कंबाइन करना हो तब हम किसका यूज़ करेंगे ज्वाइन का. In join query, more than one table are listed in from clause. Means हम अगर दो या more than two tables को combine करेंगे तो हम always किसका use करेंगे from clause का. Student, we need to drive data from more than one table. On that situation, we use join. So students, we can say that a join is used when an SQL query require data from more than one table on database. Joins can compare two or more tables by specifying a column from each, comparing the values in those columns row by row and concatenating rows that have matching values. तो स्टूडेंट हम जॉइन की हेल्प से टू और मोर टेबल्स को कंबाइन करेंगे जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ स्पेसिफाई कॉलम देना होगा. उन कॉलम की वैल्यू को आपस में कंपैरिजन होगा, रो बाय रो हो सकता है. देन जैसे ही वो आपस में मैच हो जाती है तो उन्हें कॉन्कनेट किया जाता है मीन्स कंबाइन किया जाएगा और मैचिंग वैल्यू को एज अ आउटपुट डिस्प्ले होगा जिसके लिए हमें किसका यूज़ करना होगा फ्रॉम क्लॉज का. स्टूडेंट द फ्रॉम क्लॉज इज यूज्ड to specify which tables and views have to be joined. So I hope it is clear to you what do you mean by join. On the basis of join definition, MySQL provides various type of join: inner join, outer join, self join, natural join and full outer join. But student, according to our syllabus, हमें सिर्फ तीन जॉइन को ही प्रिपेयर करना है. फर्स्ट क्रॉस जॉइन और वी कैन से दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेकेंड इक्वी जॉइन and third one is natural join. So let's see it one by one. First, cross join. Student, it returns all possible concatenation of all rows from both the tables. That is, one row of first table is joined with all the rows of second table. Cartesian product join each row of one table with each row of another table. So student, if first table have 6 rows and second table have 4 rows, then total number of rows in output will be 6 cross 4 is equals to 24. That is, total number of rows after Cartesian product, or we can say that cardinality is equal to cardinality of first table cross cardinality of second table. हम कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस जॉइन के बारे में एक बात कह सकते हैं कि द क्रॉस जॉइन इज़ वेरी बेसिक टाइप ऑफ जॉइन that simply matches each row from one table to every row from another table. So student, Cartesian product of two table is also known as cross join. For cross join, I am taking one example. All of you please watch it carefully. Student, I have one table, color table, and second one is shade table. Now student, in a color table I have one attribute name and in shades table I have one attribute as name. ओके अगर हमें इन दोनों टेबल पर क्रॉस जॉइन अप्लाई करना हो तब हम क्वेरी कैसे लिखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शेड्स कॉमा कलर. So student, after applying this query, as you can see this, each row from one table means each row of shade table matches with every row from another table. So output will be like this.
बट स्टूडेंट इस क्वेरी को जैसे हम अप्लाई करते हैं तो टेबल तो ज्वाइन हो रही है, बीच में आपको एक वर्टिकल लाइन भी डिस्प्ले हो रही है. इन केस यू वांट टू रिमूव दिस वर्टिकल लाइन, देन वी अप्लाई क्वेरी लाइक दिस. Select concate in a small bracket first attribute comma single quote comma second attribute of second table, small bracket close, from first table name comma second table name and semicolon. So you can see in this आउटपुट आपको बीच में जो वर्टिकल लाइन पहले आउटपुट में डिस्प्ले हो रही थी वो रिमूव हो गई है. स्टूडेंट हमने यहाँ पर कॉन्केट फंक्शन का यूज़ किया है फॉर जॉइनिंग टू कॉलम्स ऑफ टेबल. सो कॉन्केट फंक्शन का वर्क क्या होता है, डिफरेंट कॉलम्स की जितनी रो है आपस में इनको ज्वाइन करना या कंबाइन कर देना विदाउट शोइंग अ वर्टिकल लाइन बिटवीन देम. Okay, I hope it is clear to you. It is your cross join, or we can say that first type of join. Student, you can do it practically at your home for this join operation, or we can say that first cross join. First of all, you create a first table like color, and you create a second table like shades and apply the query same as जैसे मैंने अभी आपको बताया है, and आपका आउटपुट सेम ऐसे जनरेट हो जाएगा. Student, this is the second type of join. Name of this join is Equi-Join. Equi-Join, the join in which columns are compared for equality, is called Equi-Join. A non-equi-join specify condition with non-equality operator. Student, in equi-join we put star in the select list, therefore the common column will appear twice in the output. So equi-join combining rows that have equivalent values for the specified column. So we can say that equi-join always return match records from both the tables. टेबल्स को अगर हमें कंबाइन करना है तो उसके लिए हमें दोनों टेबल का एक कॉमन फील्ड लेना होगा. दोनों टेबल में उन कॉमन फील्ड के बेसिस पे ही, उनकी इक्वालिटी के बेसिस पे ही हम दोनों टेबल को ज्वाइन कर पाएंगे. दोनों टेबल के कॉलम को कंबाइन करने के लिए हम या तो उनके मिडिल में स्टार सिंबल यूज़ करेंगे, अदरवाइज डॉट ऑपरेटर का भी हम यूज़ कर सकते हैं. बट स्टूडेंट, इक्वी जॉइन में अगर हम दो कॉलम को कंबाइन करते हैं तो उसमें जो कॉमन कॉलम है वो हमेशा कितनी बार रिपीट होगा, 2 टाइम्स. फॉर अंडरस्टैंडिंग द आउटपुट, लेट्स टेक 2 टेबल. One for employee means which contained employee detail with department number, and another one is department. Another for department contains department number and other department detail. So student, employee and department table में one common field क्या हो गई, department number. Let's see these table one by one. First table is employee table. Here employee table have 1 2 3 4 means 4 attribute. First attribute name employee number, second attribute employee name means e name, third department number, and fourth attribute salary. And how many rows are there? There are 13 rows in a employee table. Second table is department. Here 3 attribute present. First attribute name department number, in short we call it DEPT number, NO. D name second attribute, third attribute D head. And how many rows are there? There are 4 rows in department table. नाउ स्टूडेंट, अब हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, इक्वी जॉइन. तो अभी हमने देखा इक्वी जॉइन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डॉट ऑपरेटर का और स्टार सिंबल का. तो हम यहाँ अभी एसक्यूएल क्वेरी में डॉट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं. सो लेट्स सी इट. स्टूडेंट, फॉर दिस इक्वी जॉइन वी राइट द क्वेरी लाइक दिस. select star from employee comma department. Both are the name of the table, employee and department, where condition is emp dot dptno equal dept dot deptno semicolon, means first table dot first column equal to
second table name dot second column. Both the columns are common here. स्टूडेंट इक्विजॉइन के लिए हमने यहाँ पर एक इक्वेलिटी कंडीशन दी है। मीन्स एम्प्लॉय टेबल जो आपका फर्स्ट टेबल था उसका एक एट्रीब्यूट हमने ले लिया है डिपार्टमेंट एनओ, इक्वल किसके कर दिया है, जो आपकी सेकेंड टेबल मतलब डिपार्टमेंट टेबल थी उसका एक फील्ड ले लिया डिपार्टमेंट नंबर। दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है, डिपार्टमेंट नंबर। मीन्स इक्वलिटी हम किसको देखेंगे, डिपार्टमेंट नंबर। स्टूडेंट आउटपुट कैसे जनरेट होगा, अगर एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर मैच करती है वैल्यू डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से, तो वो सारा आउटपुट आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। इस एग्जांपल में पूरा शो हुआ है। The student, as you can see here, common columns appear twice in output, means दो बार आउटपुट में कॉमन जो कॉलम्स है वो डिस्प्ले हुए हैं। तो स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी हमने दोनों टेबल्स को आपस में क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम और वी कैन से दैट कॉमन एट्रीब्यूट। इस क्वेरी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं जिसके लिए हम दोनों टेबल का एलियास सेट कर देते हैं। मीन्स एक शॉर्ट वर्ड यूज कर लेते हैं। वी कैन ऑल्सो गिव टेबल एलियास मीन्स निक नेम फॉर टेबल नेम and further we can use this name anywhere in query in place of table name. Student, this is useful when table name is of big length and we can shorter the query, तब उस कंडीशन में हम एलियास का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम क्वेरी को कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp स्पेस e कॉमा dpt space d where e dot dpt no equal d dot dpt no semicolon. The output will be same. मीन्स हमें यहाँ पर अब टेबल का पूरा नाम ना लिखते हुए सिर्फ उनका शॉर्ट वर्ड यूज करना होगा। e डॉट डी पी टी एन ओ इज इक्वल टू डी डॉट डी पी टी एन ओ। इक्वलिटी की कंडीशन स्टूडेंट सेम होगी, एक कॉमन फील्ड के बेसिस पर हम टेबल को ज्वाइन करेंगे तो आउटपुट भी आपका क्या होगा, सेम होगा। बस क्वेरी लिखने का जो तरीका है, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। Student, this is the third type of join. The name of topic is a natural join. Student, in a previous join, or we can say that in a equi-join, the result of an equi-join contain two identical columns. One of the two identical columns can be eliminated by resetting the query. This result is called natural join. So student, we can say that the join in which only one of the identical columns exist is called natural join, or equi-join minus one of the two identical columns is also known as natural join. It is similar to equi-join except that duplicate columns are eliminated in the natural join that would otherwise appear in equi-joins. Means natural join ऐसा join होता है जिसमें duplicate columns exist नहीं करते। In natural join we specify the names of columns to fetch in place of star or asterisk which is responsible of appearing common column twice in output. मीन्स स्टूडेंट नेचुरल जॉइन में भी हम वेयर कंडीशन का यूज़ करते हैं। कॉमन कॉलम के बेसिस पर टू डिफरेंट टेबल्स को कंबाइन करते हैं, बट नेचुरल जॉइन में जो कॉमन कॉलम होता है उसका रिपीटेशन नहीं होता। मीन्स जो कॉमन कॉलम है जिसके बेसिस पर हम टेबल को कंबाइन कर रहे हैं वो आउटपुट में सिर्फ सिंगल टाइम और एक ही बार क्या होता है, डिस्प्ले होता है। इसका रिपीटेशन या डुप्लीकेशन ऑफ कॉलम नहीं होता। For natural join, let's see one example. Here we are taking two tables. First table name is employee, second table name is department. On the basis of employee and department, here we are taking three attributes: e name, comma salary, comma d head means department head. For displaying these three attributes, we use the select query like this.
सिलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा डी हेड मीन्स जो आपने 3 कॉलम्स लिए हैं उन्हीं के रिजल्ट आपको एज आउटपुट डिस्प्ले होंगे. आफ्टर दैट यूज फ्रॉम क्लॉज employee space E comma department space D means here small e and D are column alias where means conditions E dot department number is equal to D dot department number means it is an equality condition. यहाँ पर हम चेक करेंगे कि एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर किसके इक्वल हो रहा है, डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर्स के. अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तब आपकी टेबल क्या हो जाएगी, इस कंडीशन के बेसिस पे ज्वाइन हो जाएगी. सो स्टूडेंट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी आउटपुट विल बी लाइक दिस. But student, see here we are not giving star like in the Equi-Join, but we are giving list of column to fetch. Then in this condition the error will generate. The reason of this error is the department number exists in both the table. So in this case if we are selecting or using only department number, then it becomes ambiguous from which table this department number will be selected. So to resolve this error, just qualify the common column by table name as table name dot column name. So student write query like this, select employee number comma employee name comma emp dot department number. ओके स्टूडेंट, जब हम ये क्वेरी में डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और टेबल के साथ में हम किसका यूज़ करेंगे, डॉट लगा के कॉलम का, तो एम्बिगियस की जो एरर है वो जनरेट नहीं होगी और इक्वलिटी के बेसिस पर आउटपुट जनरेट होगा जिसमें आपका डिपार्टमेंट नंबर 2 टाइम्स रिपीट नहीं होगा. दैट्स द रीज़न इट इज़ कॉल्ड नेचुरल जॉइन. सो नेचुरल जॉइन ऐसा जॉइन है in which only one of the identity column is exist. I hope आपको तीनों जॉइन क्लियर हुए होंगे. If you have any doubt and any query related to this topic, you can message me or ask me. Okay student, that's all for today's class. Thank you.